हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीडिंग्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर सीआरपीसी। तो इसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, हु एंड ऑल आर एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, व्हाट इज द रेशियो और अमाउंट फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, अथॉरिटीज कौन सी हैं जिसके आगे हम मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मेंटेनेंस। बेसिक मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस तो हम सब जानते हैं, सपोर्ट करना, किसी चीज के गुड कंडीशन को मेंटेन करना, द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग समथिंग और समवन। ठीक है, बट क्या उसका लीगल डेफिनेशन है सीआरपीसी में? द आंसर इज नो। द वर्ड मेंटेनेंस इज नॉट डिफाइंड इन द सीआरपीसी। चैप्टर 9 of CRPC deals with provisions for maintenance of wife, children and parents. इसमें बताया गया है कि सीआरपीसी में मेंटेनेंस डिफाइन नहीं किया गया है, पर प्रोविजंस दिए गए हैं जिसकी बेसिस में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर क्लेम्ड. Okay, the entitlement of claiming maintenance is certainly based on the assumption that the claimant does not have the sufficient means to support herself. इसमें बताया गया है कि this is the essential and very important condition to be fulfilled while claiming maintenance. वो है कि claimant does not have the sufficient means to support herself. अब इधर क्लेमेंट कौन है? वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इनमें से कोई एक होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द क्लेमेंट. मेरे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स या फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम सोर्स, या फिर आई एम नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन. आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट टू एनीवन. लाइक कोई और मेरा फंडिंग करता है फॉर माय लाइवलीहुड. This will not be entertained while examining the maintenance claim. Okay. The maintenance generally covers the expenses for necessaries or essentials for the substance of life. इसमें बताया गया है what are the basic essentials या फिर essentials. What are the basic essentials? Clothes, food और shelter. These are the three essentials. इसके अलावा भी इंक्लूड किया गया है मेंटेनेंस में कि क्या क्या चीजें होना चाहिए. स्टेटस भी देखा जाता है, कंडीशन भी देखा जाता है, ओके, और कंफर्ट भी देखा जाता है. इसमें देखो, द पर्सन शुड कंटिन्यू लिविंग इन द सेम स्टेटस एंड कंडीशन एज बिफोर द डिवोर्स. अगर किसी का डिवोर्स हो गया, उससे पहले वो लेडी, उसकी वाइफ कैसे जी रही थी, उसका स्टेटस क्या था, लग्जूरियस लाइफ था या फिर नॉर्मल लाइफ था, वो भी देखा जाता है. Maintenance not only confines to the needs of the spouse, but it also extends to any children the couple had before having a divorce or before being separated. The expenses and the requirements of the children are to be fulfilled even after the divorce of spouse. इसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ का नहीं देखा जाता. अगर उस वेडलॉक में कोई चिल्ड्रन है, कोई किसी का बर्थ हुआ है या डिवोर्स से पहले या सेपरेशन से पहले, तो उसको भी मेंटेनेंस दिया जाता है. उसके लिए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. उस चाइल्ड के लिए भी हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. और डिवोर्स के बाद ये नहीं बन जाता है कि डिवोर्स हो गया तो चाइल्ड का मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे. नो, चाइल्ड का सारा एक्सपेंसेस शुड बी spent by the spouse only. Next है scope and objective of proceedings. The proceedings are not punishable in nature. The main objective of Chapter 9 of CrPC is not to punish a person who is not maintaining those whom he is bound to maintain. इसमें बताया गया है कि ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं सीआरपीसी के अंडर चैप्टर 9, ये पनिशेबल इन नेचर नहीं है. ये सिर्फ एम करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ wife, children and parents. That's it. This is not punishable in nature. The main objective is to prevent homelessness by way of procedure to provide a speedy remedy to those who are in a pain. Speedy remedy provide करता है ये provisions. Okay.
It seeks to shield the neglected wife, parent, and children from complete ruin and destitution through straightforward, quick, and effective restricted relief. इसमें बताया गया है कि आफ्टर द डिवोर्स वाइफ या चाइल्ड या फिर पेरेंट्स को लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, लेफ्ट आउट महसूस नहीं होना चाहिए उनको सोसाइटी से। दिस इज अ शील्ड फॉर देम, दिस इज अ protecting agent for them, which is protecting them from the society and giving them proper maintenance. Okay, it puts into practice a man's fundamental obligation to support his wife, children, and elderly parents who are self supporting. इसमें बताया गया है कि ये एक्ट, ये जो 125 सेक्शन है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अंडर चैप्टर 9, ये laid down करता है कि the individual has the individual's fundamental duty to perform, to maintain his wife, to maintain his children, to maintain his elderly parents. Okay, this is a duty. नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इतने देर हमने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप सब पढ़ लिया। अब हम देखने वाले हैं सेक्शंस जो चैप्टर 9 के अंदर दिया गया है, सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 तक। ओके, so section 125 of CrPC, order for maintenance of wife, children and parents. Subsection 1, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain। ध्यान से देखो क्या बोला गया है, if any person having sufficient means, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हस्बैंड has sufficient means, okay, then also he is neglecting or refuses to maintain his wife या फिर child या फिर parent, then the application is filed under section 125 of CrPC। ठीक है, सबसेक्शन ए बताता है his wife unable to maintain herself, B his legitimate or illegitimate minor child whether married or not unable to maintain itself, और C बताता है is legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or D his father or mother unable to maintain himself or herself। ठीक है, these are the conditions, these are the categories who can claim maintenance। ठीक है, a magistrate of first class may upon proof of such neglect or refusal order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife, child, or father or mother as such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from direct time to time। ओके, मैंने पहले ही बोला था which authority, this is the authority, magistrate of first class judicial। ओके, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन जाते हैं फॉर व्हाट, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट हैज द डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आफ्टर एग्जामिनिंग द फैक्ट्स, आफ्टर एग्जामिनिंग द केस, he can increase or decrease the maintenance amount whichever he thinks fit। okay, or and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। किसको पेमेंट करना है, कौन से मेथड से, which method to use for the payment is also directed by the magistrate। ठीक है, तो the authority is judicial first class magistrate,
who and all can who is entitled to apply for like maintenance claim maintenance, वो भी हमने पढ़ा, wife, child, father और mother. Okay, these are the categories. ये जो हमने अभी पढ़ा वो बेयर एक्ट का लैंग्वेज था. अभी हम सिंपल लैंग्वेज देखते हैं. Section 125 gives a statutory recognition to the moral, legal and fundamental duty of a man who maintain his wife. ठीक है, वाइफ, चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स. ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मोरल या लीगल फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ अ मैन to maintain his wife, his children, or his aged parents. ठीक है. Although this section also benefits a distressed father, the main thrust of this section to assist women and children. इस सेक्शन का मेन मोटो, मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड चाइल्ड्स इंटरेस्ट. ओके, सो objectively, the CrPC's maintenance clause aimed to advance social fairness and safeguard weaker people who are unable to support themselves. The right of maintenance not only extends to wife but also to the dependent children and the indigent person who are unable to take care of themselves and also divorced wives. इसमें बताया गया है मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है. जैसे मैंने पहले बताया, वाइफ, his legitimate or illegitimate child, his parents or his divorced wife. Okay, but the claim of maintenance depends on the husband having sufficient means or not. ये मैंने पहले स्लाइड में बताया था. पहला एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस? वो है कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए. ओके, देन ही कांट रिफ्यूज और रिजेक्ट द क्लेम. If he has sufficient means, then he has to give the maintenance to the person, to the aggrieved person. The most important factor of maintenance is that the party who is relying on maintenance should not have any other source of income and is not dependent on anyone else. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, जो क्लेमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आई एम द क्लेमेंट. अगर मेरे पास कोई जॉब है, सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें से इनकम मेरे को मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल रेंटेड हाउस, मेरा घर है, मैं रेंट पे दे रही हूँ. ओके, या फिर कोई person who is funding me for my livelihood, maybe my father, maybe my mother, someone else. Okay, so अगर ऐसा कोई income source है तो this claim won't be entertained. The person should not have any independent source of income. The person who is claiming maintenance can claim even if he has a movable or immovable property, but the property should not yield any income. जैसे कि मैंने बताया, कोई फ्लैट है, अगर वो रेंटेड है तो फिर मेरे को इनकम आ रहा है. ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसमें से इनकम जनरेट हो रहा है. ओके, if any of the property of the claimant is able to yield income, then he or she cannot claim maintenance. The amount of maintenance is not specified under law. It merely depends on the discretion of the court and the financial condition of the maintainer and the status and comfort of the receiver of maintenance. जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है वो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का. The magistrate can increase or decrease the amount. Okay, किस बेसिस पे? While seeing the financial condition of the maintainer, जो हस्बैंड है उसका financial condition देखेंगे, जो रिसीव कर रहा है, जो क्लेमेंट है, उसका स्टेटस एंड कंफर्ट भी देखा जाता है. ओके, ये सब चीजें हम एप्लीकेशन के टाइम देखते हैं.
नेक्स्ट इज सेक्शन 125 सब क्लॉज 1। इसमें टू important एलिमेंट्स है, neglects और refuses to maintain या फिर sufficient means। Neglects or refuses to maintain. This code provides that any person who has sufficient means to maintain himself cannot deny the maintenance to the wife, children, and parents if they are not able to maintain themselves. इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई भी पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मींस है, द हस्बैंड हैज सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, कैन नॉट डिनाई द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ओके, it is a secular provision irrespective of any religion it is applicable. Okay, however sometimes the husbands against whom the order of maintenance is passed may not be satisfied with the judgment passed by the lower court, and therefore they should have a platform where they can put up their grievances against the order. In this case, appeal cannot be made, only revision application shall be made by the aggrieved party under section 397 of the code. Okay, इसमें बताया गया है कि अगर husband, who will be the aggrieved party if he is not satisfied with the judgment of maintenance, agar he is not satisfied with the order, he can approach to the higher court. उनके पास कुछ तो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना, लोअर कोर्ट में नहीं है तो he कैन नॉट गो फॉर अपील। अपील होता है जो हायर कोर्ट में देते हैं, ओके, बट रिवीजन ऐसा नहीं है, तो वो अपील के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ रिवीजन के लिए जा सकते हैं वही कोर्ट में। ओके, अंडर सेक्शन 397 ऑफ द कोड। सफिशिएंट मीन्स क्या है? The most important requirement is that a person cannot be ordered to pay maintenance to another person unless they themselves have adequate resources to support the person who has the claim, and neglects or refuses are to do so. इसमें क्या बोला गया है? The most important requirement, it is the most important requirement कि अगर जो मेंटेनर है, जो हस्बैंड है, उसके पास sufficient means नहीं है, then he can't maintain his wife, child या फिर parents. But अगर उसके पास sufficient means है and then also he is neglecting या refuses to maintain his wife, child या फिर parent, then you can file application under 125. The person asserting that he lacks sufficient means to sustain has the burden of proof. The fact that he is unemployed does not excludes from the requirement. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम द हस्बैंड, मेरे पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, अगर मैं बोल रही तो मेरे ऊपर रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। आई हैव टू प्रूव दैट आई रियली डोंट हैव सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन, आई हैव नो सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन माई सेल्फ, देन हाउ कैन आई मेंटेन माई वाइफ और चिल्ड्रन और पेरेंट्स? ये बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड पे होता है। ओके, और हस्बैंड कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता। नो, इन सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड बेला एम त्रिवेदी recently held that it is the sacrosanct duty of the husband to provide financial support to the wife and to the minor children if he is able body is obliged to earn by legitimate means and maintain his wife and minor child. ये recent judgment था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर the person is abled body, then he has to maintain his wife, children या फिर parents. Okay,
नेक्स्ट है पर्सन्स एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस। कौन कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस? ओके, ये बताया गया है सेक्शन 125(1) ए में बताया गया है। ए बी सी डी 4 में बताया गया। ओके, ए में बताता है टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। ए में वाइफ के मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125(1) ए, a lawfully married woman who is unable to support herself and has insufficient means of subsistence is eligible. Likewise, a divorced woman who has not yet remarried is also eligible to claim. इसमें क्या बताया गया है? अगर lawfully woman married है to that person, he has to give maintenance. Okay, she is eligible for claiming maintenance. Okay, या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है और अगर रीमैरी नहीं किया है अभी तक तो शी कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस। अगर रीमैरी कर दिया देन शी कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस। एक्सेप्शंस इन द प्रोविजन फॉर द purpose of providing maintenance to the wife, the husband has to be sufficient enough to support his wife after the separation, and at the same time, the wife must not be living in adultery or living separately with her husband without any sufficient reasons. इसमें बताया गया है कि अगर मेंटेनेंस क्लेम किया गया है तो ये जरूरी है कि हस्बैंड सफिशिएंट मीन्स रखते हैं टू मेंटेन हिज वाइफ आफ्टर द सेपरेशन आल्सो, बट वाइफ का कोई एडल्ट्री नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा रिलेशन किसी और के साथ नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द हस्बैंड। हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ उनका एडल्ट्रिक रिलेशन है, then she is not entitled to claim maintenance. और अगर without any sufficient reason, wife is not living with husband, they are separated, then also the claim is not entertained. Okay, the second is even if they are living separately in mutual consent, then also the wife will not be entitled to any sort of maintenance. अगर mutual understanding में separate हुए हैं, concern से separate हुए हैं, तो then also they are not, she is not entitled to claim maintenance. Whenever the judgment is passed in favor of the wife, the court has to make sure that the husband has sufficient means to provide maintenance to the wife. अगर जजमेंट पास किया फेवर ऑफ वाइफ तो हस्बैंड के पास कोर्ट को मेक श्योर करना पड़ेगा, कोर्ट हैज टू एग्जामिन दैट वेदर हस्बैंड हैज सफिशिएंट मींस टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ और नॉट। ठीक है, the court also needs to make sure that the wife after the separation does not have enough money to maintain herself. ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कोर्ट को कि आफ्टर द सेपरेशन के बाद भी वाइफ के पास इनफ मनी नहीं है कि वो अपना खर्चा उठा पाए। शी इज स्टिल डिपेंडेंट, देन शी कैन क्लेम। अगर वो इंडिपेंडेंट है, शी कैन take her expenses, then she can't claim maintenance. Okay, next है section 125(1) B and C talks about the maintenance of child. B में बात करता है illegitimate legitimate child के बारे में, C में बात करता है illegitimate legitimate child, daughter specifically for the daughter, okay, for the female child. तो ये दोनों चीजें हमने साथ में क्लब किया है। A legitimate or illegitimate child, male or female, who is unable to support itself is a child under this section. In case of a daughter, the father will only be liable to maintain till she attains majority. Furthermore, the abnormal child is also entitled to be maintained. देखा, इसमें दोनों चीजें बताए गए हैं, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड, नो मैटर व्हाट, मेल है या फीमेल है,
अगर वो अपना लाइवलीहुड नहीं मीन्स नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है सपोर्ट करने के लिए, he or she is entitled to claim maintenance. But in case of daughter, if the daughter has attained majority, then the duty of the father is there, ended there. He should she can't claim for maintenance after that, after the majority. But अगर फीमेल या मेल जो भी but abnormal child है, then he or she is entitled to claim maintenance. Okay, इसमें तीन तीन चीजें बताए गए हैं. No matter what is the gender, if he or she claims and that person, that child is not unable to support itself, then it's a child under this action section. And अगर daughter है and she attained majority, then she can't claim maintenance. And third one is abnormal child है तो he or she can claim maintenance. Minor means a person who under the provisions of the Indian Majority Act 1975 is deemed not to have attained his majority. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1975 में डिफाइन किया गया है द डेफिनेशन ऑफ माइनर. ओके, 18 years, below 18 years is minor, above 18 years is major. Okay, the Bombay High Court recently held that a child can be ordered to undergo paternity test only in exceptional cases, and fathers attempt to avoid paying maintenance to son by seeking DNA test should be thwarted at the very inception. ठीक है, इस केस में बताया गया था, रिसेंट जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, दैट अगर कोई फादर नेग्लेक्ट या रिफ्यूज कर रहा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज चाइल्ड, ग्राउंड्स में कौन से ग्राउंड्स में रिफ्यूज कर रहे हैं? फॉर द डीएनए टेस्ट, सीकिंग डीएनए टेस्ट वेदर ही इज माय चाइल्ड और नॉट, he can't do that. For the maintenance he can't do that. For divorce he can seek for DNA test, but for maintenance he is the official father of that child, he has to maintain that child. Okay, section 125(1)(d) talks about the maintenance of parents. Under this, both father and mother are entitled to be maintained equally by son and daughter, but the court must be satisfied that the daughter has the means to support herself. Parents also include adoptive father and adoptive mother. पेरेंट्स के केस में क्या है? पेरेंट्स के केस में फादर एंड मदर आर एंटाइटल्ड टू मेंटेन इक्वली. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि फादर को मेंटेन किया जाएगा, मदर को नहीं. नो, both of them are equally maintained under this provision by the son and daughter. बट ये चेक किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा by the court that daughter is or has the means to support herself. Okay, in this case Bombay High Court held that the father or mother can claim his or her maintenance under section 125(1)(d) if he or she is unable to maintain himself or herself. But it is also necessary that if parents claim maintenance to their children, children must have sufficient means to maintain the father or mother, and yet neglects or refuses to maintain the father or mother. The provision is in section 125(1)(d) is a very special provision which enables the magistrate to make an order against a son or daughter for payment of monthly allowance for the maintenance of the father or mother who is unable to maintain himself or herself. इस केस में बताया गया था कि अगर फादर या मदर अपना सफिशिएंट नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, दे कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम डॉटर और
daughter or son, both of them. They can seek from both of them. Okay. And if they, court will check that if they have sufficient means to maintain father and mother, they are entitled to do that. But they are they are having sufficient means, still they are not, they are refusing or rejecting, then court has the magistrate has the power to order for payment of monthly allowance for the maintenance of father and mother who are not able to maintain their maintain himself or herself. Okay, maintain their expenses. And the second case law, in this case, it was held that parents can claim maintenance from daughters. Even married daughters are bound to provide the maintenance to their parents. Before ordering maintenance in favor of parents against their married daughter, the court must be satisfied that daughter has sufficient means to her own independently of the means or income of her husband, and father or mother are unable to maintain himself or herself. This decision is good for those parents who only have girl child and is increased the security of parents. Yeah, क्योंकि आजकल देखा है सबने कि ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं. सो ऐसे राइट जो डॉटर्स हैं, अगर उनके घर में डॉटर्स हैं, उनकी डॉटर्स हैं, दे कैन क्लेम फॉर दैट ऑल्सो इफ दे आर मैरिड. देयर इज नो इशू, but the court will ensure that the daughter is daughter has maintaining has the sufficient means to maintain her parents. Then only court will order such order, otherwise no. Then we go to procedure. Procedure is described under section 126. 125 खत्म हो चुका है. These were the things it was included. अब हम बात करेंगे procedure. Order किस procedure में पास होता है? Section 126 of Section 126 subclause 1. Proceedings under Section 125 may be taken against any person in any district where he is or where he or his wife resides, or where he last resided with his wife, or as the case may be with the mother of the illegitimate child. Evidence to be taken in the presence of person against whom maintenance is to be ordered. If a person is willfully avoiding summons, then ex parte evidence is taken in that case. इधर क्या बताया गया है कि प्रोसीजर दिया गया है कि proceedings under section 125 may be taken against any person in any district, जहाँ पे भी वो रहता है, रहा था वो वाइफ के साथ, या फिर where he last resided with his wife, or as the case may be the mother of illegitimate child. Okay. सेकेंड में बताया गया है एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom maintenance is to be ordered. थर्ड बताता है इफ अ पर्सन इज विलफुली अवॉइडिंग समन्स, देन उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है. Then section 127 alteration in allowance. In this section, if a magistrate ordered to give allowance for maintenance under 125 according to the conditions of parties at that time, but if the present condition of parties have changed, then he can also order the allowance. इसमें ये बताया गया है अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है फॉर गिविंग अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, बट जिस टाइम पे उनने ऑर्डर पास किया था तब का कंडीशन और करंट डेट का कंडीशन अगर डिफर करता है, तो he can ask for alteration. He can do alteration. He has the discretionary power for that. Okay. Who has? Magistrate. Second point है magistrate shall cancel or revoke any order given under section 125 by him if it appears that it should be
cancelled in consequences of any decision of the competent civil court. For example, if magistrate has ordered to give allowance to wife after divorce, but civil court has ordered to live together, then magistrate has to revoke his order which was given under section 125. इसमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि अगर मजिस्ट्रेट ने पहले ऑर्डर किया था कि 10,000 मेंटेनेंस दिस पर्टिकुलर वुमन दिस पर्टिकुलर इस वाइफ अपने वाइफ को आपको मेंटेनेंस देना है और वो देते थे, बट सिविल कोर्ट में उनका जो डिवोर्स का ये रखा हुआ था वहां पे कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया टू लिव टुगेदर, साथ में रहते तो फिर मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, there is no need of maintenance. In that situation, magistrate can revoke the orders. Okay. Third है whether an order has been made in favor of women under section 125, then the magistrate can cancel the order in the following cases. अगर वुमेन के लिए मतलब वुमेन के फेवर में उनने ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 125 के अंडर, मजिस्ट्रेट कैन कैंसल, कब कैंसिल कर सकते हैं, इफ अ वुमन इज रीमैरिड आफ्टर डिवोर्स, अगर उसने वुमन ने वापस से शादी कर लिया, रीमैरिड आफ्टर डिवोर्स, देन मजिस्ट्रेट कैन कैंसिल द ऑर्डर. इफ वुमन हैज टेकन अलाउंस अंडर एनी पर्सनल लॉस आफ्टर डिवोर्स, अगर डिवोर्स के बाद पर्सनल लॉस के अंडर कोई अलाउंस लिया है तो तब कैंसिल कर सकते हैं. If a woman has voluntary leave her right to maintenance, अगर वो voluntarily लीव कर रही है अपने right to maintenance को तब कैंसिल कर सकते हैं. The civil court shall take into account sum which has been paid to such person as monthly allowance for maintenance and interim maintenance under section 125 at the time of making any decree for the recovery of the maintenance or dowry. इसमें बताया गया है अगर इन्हीं रिकवरी या फिर डाउरी के लिए डाउरी के रिलेटेड अगर कोई सिविल कोर्ट में सम होता है, सम कैलकुलेशंस होते हैं regarding the recovery of money and dowry, then this allowance for maintenance and interim maintenance should be calculated person as monthly. ये बताया गया है सेक्शन 127. 128 बताता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर. एनफोर्समेंट ऑफ, अब एनफोर्स कैसे किया, पहले प्रोविजंस बताए, फिर बताया पहले प्रोविजंस बताए, फिर बताया कि किस पे अप्लाई होता है, कौन कौन से कंडीशंस बताए, अब एनफोर्समेंट कैंसिलेशन बताया, अभी एनफोर्समेंट बताया. Section 128 of CrPC deals with enforcement of orders of maintenance. Copy of order under section 125 is given to that person free of cost in whose favor it is made. जिसके भी फेवर में ऑर्डर पास हुआ है उसको कॉपी ऑफ ऑर्डर शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. इन केस ऑफ ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन उसके गार्डियन को दिया जाता है. ओके. If any magistrate has made an order under section 125, then any magistrate of India can enforce this order where the person lives who have to give maintenance. इसमें बताया गया है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने पास किया गया है ऑर्डर पास किया है अंडर सेक्शन 125, देन कोई भी मजिस्ट्रेट, इंडिया का कोई भी मजिस्ट्रेट ऑल ओवर इंडिया कोई भी मजिस्ट्रेट एनफोर्स कर सकता है ये ऑर्डर को और ये बता सकता है कि पर्सन लिव्स हु हैव टू गिव मेंटेनेंस. ठीक है. द मजिस्ट्रेट हैज टू सैटिस्फाई टू कंडीशंस, identity of parties and proof of non-payment of allowance.
ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए मजिस्ट्रेट को। इतना था सिर्फ। अब आते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूड करके बताती हूँ मैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ा क्रिमिनल प्रोसीजर के, कि 125 था ऑर्डर्स, ठीक है, उसमें बताया गया था कौन कौन एंटाइटल्ड है फॉर द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस, कौन कौन से बेसिस पे किया गया है, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, अल्ट्रेशन ऑफ मेंटेनेंस, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, ये सब बताया गया है चैप्टर 9 में। Chapter 9 of Code of Criminal Procedure is essential for the protection of the rights of divorced wife, children, and aged persons, aged parents. ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, किसके राइट को प्रोटेक्ट करता है? डिवोर्स्ड वाइफ, चाइल्ड, aged parents. It is made to protect them from unusual livelihood. Maintenance is the duty of everyone who has sufficient means for the same. ये उस इंसान का ड्यूटी है to perform that, कि अगर उनके पास sufficient means है तो you have to give maintenance. Okay. In this chapter of CrPC, there are various provisions given related to maintenance, like who is entitled to maintenance, essential conditions for granting maintenance, procedure for maintenance, alteration of the previous order, enforcement of order of maintenance. इतने चीजें हमने कवर किए. Okay. Thank you so much, everyone.